Today is a special day. It's your birthday. So blow out the candles and make a wish, 'cause it may well come true. Happy birthday to you, Heather. Hi Nagraj, wishing you a very happy, healthy and safe birthday. Words are not flowing into the mouth, and time is flying past. My association with you is almost over 50 years, and while you celebrate your birthday, I remember the time we spent together. I have seen you from growing from a child to a man. तेरे लिए 4 पंक्तियां लिखा है मैंने, पता नहीं हाउ विल यू टेक इट. ना गरज तुझे किसी की हमदर्दी की, ना गरज किसी के एतबार की, ना गरज तेरा नाम उसमें है, क्योंकि खुद है हमदर्द सभी का तू, और इस बात से तुझे नहीं होगा इनकार. ना गरज तुझे किसी के हमदर्द की, ना गरज तुझे किसी की एतबार की. नगर तेरे नाम का ही हिस्सा है, तेरे नाम में नगर है, और राज तू सबके दिल के नगर में कर रहा है. ना गरज तुझे किसी की हमदर्दी की, ना गरज तुझे किसी की एतबार की. इनायत में बस इतना खुदा से करूँगा कि मुझे इजाज़त दे कि उसकी हर इबादत में तुझे शामिल करूँ. जन्मदिन की शुभकामनाएं नागराज. जुग जुग जियो. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. जैसे हनुमान जी ज्ञान के अपार भंडार हैं और उनके दिल में सीता मैया, राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान हैं, उसी तरह अगर सुंदरेश का दिल किसी ने झांक के देखा सुंदरेश के दिल में, तो वो नागराज जरूर मिलेगा. नागराज, तो किसी का किसी से जुड़ा कनेक्शन हुआ या जुड़ा नहीं, तो भी नागराज से सब लोग जुड़े हुए हैं. इसके लिए हम लोग सब जुड़े हुए हैं, ये सच बात है, और दिस इज ए बिग क्रेडिट टू यू. One of the important things I think we all noticed is that even from mamas, Sundaresh and in and around, if they wanted to rely on somebody or had a hope that something has to be completed, they always will turn to only one person. That is Nagraj. और नागराज, तेरा किसी के लिए कुछ काम आना विदाउट एनी स्वार्थ इज एन आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनबॉर्न टैलेंट, एंड यू आर ब्लेस्ड without a doubt. We are all fortunate that we are associated with you. I am very fortunate because some people are rare to find, and some people are unforgettable. Some people get really attached and hope this association goes on till all mortals have a day. On this fantastic day, and to your fantastic family, Jaya and Shruti and everybody, I think you have great support, and wish you many happy returns of the day. Nagu, be yourself and enjoy. Of course, you had your own antics, like कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, चाय नहीं पीऊँगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं खाऊँगा, स्वीट नहीं खाऊँगा,
ये लहसुन नहीं कहूँगा, कांदा नहीं कहूँगा, क्या है उसका, सब लहसुन लहसुन है पूरा. Of course that is also your identity. अब करंट सिचुएशन आई नो यू कैनॉट तबला नहीं बजा सकता है, सबका खाली बैंड बजा सकता है. और थोड़ा दिन रुक जा, सब ठीक हो जाएगा. बाल बाल काट के आ जाए, मैं 2 बार काट लिया हूँ कोविड में. ओके, एन्जॉय योर डे, टेक केयर, स्टे हेल्दी. Thank you very much. Bye bye. Many more happy returns of the day, Nagaraj. I have to talk about someone whom I consider my soulmate. The very reason I use the word soulmate is because such has been the relationship we have shared with each other. So many experiences, so many relationships in the form of so many connections. Relations करके जिसको बोलते हैं, that is essentially if we are born into a family with so and so relatives and all. But then this goes much beyond the formal relationships that we share with many people. Many a time ये सब relationships नाम के वास्ते होते हैं, but ये जो relationship है, this cannot be defined in words. It is impossible to condense the feelings that I have for you within this 3-minute, 4-minute, 5-minute video. Such has been the in-depth kind of engagements we have had with each other. Start करना है तो बहुत सारा जगह से start कर सकते हैं. End तो कर ही नहीं सकते. So let me try to start. Some of the unique and most endearing qualities about you. The first thing that comes to mind is obviously the happiness. इतना हंसी ज़िंदगी में मुझे और बहुत सारे जन को अपना बिल्डिंग में, अपना सोसाइटी में किसी ने दिया नहीं हो सकते. हंसी itself is such a medicine in life. It sustains life in unimaginable ways. The hasi, the laughter that you could create out of thin air is quite a unique quality, which many or most in this world cannot, just cannot. Laughter, we are talking about very mundane base level laughter, wherein कुछ भी उसका materiality नहीं होएगा. But still at the end of that experience of laughing out that moment, you would feel so exhilarated that you would subconsciously end up thanking Nagaraj for that experience. Then comes the more subtler elements of happiness that you have created within us, or within me at least. From the base level laughter to the deeper level happiness that you have created within me is just immeasurable. Your very thought gives happiness to the mind, and this is a qualitative happiness. When someone is leading life like you in such a fun-filled fashion, obviously the very thought of that person brings in so much happiness. So apart from the basic laughter which we shared on innumerable occasions, our very being with each other used to give me so much happiness. And it is both physically being with each other, or mentally being with each other, or being connected in various ways. The very connection with you was
filled with happiness, for which obviously I'm very, very thankful to God that so much happiness could be created by someone so close. The next quality, unforgettable and unique quality about you is your helping tendency. इतना हेल्प नॉर्मल आदमी की कैपेबिलिटी के बाहर ही है, एंड ईच वन इन आवर सोसाइटी would certify the kind of help you have rendered to the society. और मेरे लिए तो पर्सनली तेरा रिलेशनशिप इतना डीप है कि मैं कुछ सोचेगा तो भी तू करके आएगा मेरे लिए. दैट इज़ a very, very different kind of relationship we share. And when someone gets into this kind of an engagement, wherein he can subtly perceive what his friend needs and he can execute on that, then there cannot be any greater aiding tendencies than this, which are possible to the mere mortal. So in this way, you have been a divinely helpful friend for me, and help not from a very materialistic angle. I'm saying it is from the core of my heart that appreciate this help. The next great and unique quality about you is your looks. लाइफ में बहुत जन को गुड लुकिंग देखते हैं, बट ओनली सम लीव अ वेरी, वेरी डीप इम्प्रेशन. एंड ऑब्वियसली फॉर समवन हु इज क्लोज एंड हु इज essentially physically also in proximate terms with the other person, looks after a point in time तो दब जाते हैं. Strangers who look at you or who look at a handsome object obviously find it very attractive, but for someone who has been with you for 50 years, still you retain this quality in you, which makes me think that this guy is so strikingly handsome. So when someone with 50 years of deep engagement can think about this quality as a striking quality, imagine someone who has not seen you, who is a stranger or who sees you very occasionally, what kind of an impact you would have had on him. I still remember vividly one of my relatives saying, film stars को देखते हैं हम स्क्रीन में, बट ऐसा मैं रियल लाइफ में देखा हूँ तो नागराज अण्णन को. फाइनली, since I have to conclude, I am saying finally because I can go on and on and on. One very important quality about you is your integration capabilities. The kind of connect you have with every member of the society is what keeps the society integrated. तेरे बिना सुंदरेश सोच के भी नहीं देख सकते. It will be a basic disintegration of the society even in our thoughts, though physically it may exist. So what does this mean is the very life of Sundaresh, and not only Sundaresh, all the society around Sundaresh, the very life or the prana in spiritual terms of our society is the one and only Nagaraj. Without Nagaraj, the very life from our society would be taken away from us. So there cannot be a greater quality than this in you, my very, very dear friend. So here's wishing you many, many, many more years of happiness and keeping the society alive. Happy birthday. many happy returns of the day, नागा. मेरा ऊपर वाला कैसा है भाई? 6 महीना हो गया सूरज को देख के. आज निकलेगा बाहर? आई डोंट थिंक तू निकलेगा बाहर.
Anyways, अच्छा, to summarize what you have been for me, I will say, I mean, in a few words. I won't take much. Okay, Nagraj means a socializer, a born socializer, a person who has lot of humor and brings smile, a born leader. Okay, has plenty of stories to tell and make others laugh. Aggression, I learned a lot of aggression from him. A born motivator, a big brother, and a very true friend. Okay, just to highlight all these points that I have made. Humor, मतलब तेरे जैसा ह्यूमरस बंदा मैंने देखा नहीं आज तक. कोई भी सिचुएशन हो वो हंसा के छोड़ेगा तू पब्लिक को. और तेरा जो हंसी है, समटाइम्स विद्या टेल्स मी टू नागराज के जैसा हंसता है. तो दैट आई हैव लर्न फ्रॉम यू. ओके, सोशलाइजर, कोई भी ओकेशन होने दे सुंदरेश का, सबसे पहला तू है उसमें, और सबसे एंड में भी तू ही है. स्टार्ट टू एंड जो करता है उसको. यू आर बॉर्न सोशलाइजर मैन. आई लर्न दैट फ्रॉम यू, हाउ टू सोशलाइज विद पीपल. लीडर कहाँ से मेरे को पता चला? आई यूज्ड टू वर्क विथ यू फॉर ऑल द गणपति as and when all the people left and only me and you were left. Okay, तो उस टाइम पे मेरे को तेरा लीडरशिप क्वालिटी समझ में आया, कैसा कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को, कैसा मैनेज करते हैं. सो दैट आई हैव लर्न फ्रॉम यू. वोंट नो, बट जो मेरा हैंड राइटिंग है, स्ट्रेट लिखने का जो हैंड राइटिंग है, आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू. When I used to visit your house to watch cable or matches, you remember India-Pakistan matches? फिर आपा बोलता था आक्रमण बन रहा इंडिया में. During those times I used to watch you write, or during the Ganpati festival I used to watch you write, and I loved your handwriting. That's where I got my handwriting from. Stories, तेरे जैसा जो स्टोरी, जो हिसाब से तो तू बोलता ना, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन टेल दो स्टोरीज एंड मेक पीपल लाफ. दैट इज इनबॉर्न क्वालिटी ऑफ यू. आई हैव लर्नड, आई हैव ट्राइड टू डू दैट, बट आई कैन नेवर डू दैट. एग्रेशन, बाप रे, तेरा एग्रेशन मैंने आज तक देखा नहीं किसी और में, सच में. और किसी में मैंने आज तक देखा नहीं उतना एग्रेशन. तेरा और पप्पू का जो झड़प होता था बाकी लोगों के साथ, जीतना है मतलब जीतना है एट एनी कॉस्ट. ओके, समटाइम्स वी यूज्ड टू वंडर व्हाई इज नागराज बिहेविंग लाइक दिस, नागराज बिहेविंग लाइक दिस, बट इट वाज लाइक दैट फॉर यू. आई मीन, यू हैव टू विन एट ऑल कॉस्ट. सो दैट आई लर्नड, एंड आई ऑलवेज टेल माई गर्ल ऑल्सो टू बी ऑलवेज, आई मीन, ट्राइंग टू विन. आई मीन, sometimes you might fail, but you always try to win. Okay. Another quality that I like about it, motivator. मुझे याद है यार, तू बचपन से मेरे को बोलता है तू क्या कर रहा है एंडी, इधर जाना, यूएस जाना, इधर पेरिपा के पास जा तू. तो फाइनली मैं पहुंचा, 5 साल के लिए रहा उधर यूएस में, सब देख के आ गया. सो हर टाइम पंजाबी भी मिलता है मेरे को, क्या कर रहा है इधर यूएस, इंडिया में कुछ नहीं है, यूएस जा तो. वो तो मेरा माँ पिताजी का प्यार है जो खींच रहा है. ओके, थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी, एंड अबव ऑल दैट यू आर लाइक अ बिग ब्रदर टू मी मैन, एंड अ वेरी ट्रू फ्रेंड. आई लुक अप टू यू फॉर एवरीथिंग, स्टिल लुक अप टू यू. ओके, be like this, Naga. Stay true to yourself, and keep bringing smiles and all. I mean, in everybody's faces, and thanks for being there. Okay, you have a wonderful day. See you. Hey Nago, wish you a very happy birthday. This song is for you on your birthday. Enjoy this one.
साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज एक दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish you a very happy birthday, Nagu. Enjoy your day. Many happy returns. Best wishes for the year ahead. Enjoy your good day. Bye.